एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली में एक बेटा है, बेटा है इसका बॉडी वेट होगा, एक मेरे घर पे शिकायत है, उनका भी वेट है 45 किलो का, आपने कह दिया इसी लाइन से रिलेटेड है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन आपको आपने एक जिंदगी का प्लान बनाया, जिससे जिनसे आप जिंदगी का प्लान बनाया, आगे जाकर के चक्कर ना हो सके। बहुत कोशिश करेंगे आज तक जो अपने तरीका है मैंने आपसे सीख जाऊँ मुझे तरीका ये है यहाँ उसमें जो है वो कम होना है, अगर 45-40 किलो वजन कम कर दो इधर नाव उतार करके क्या है अब 45-40 किलो की जोड़ी हो गई, एक घंटा है और एक और इन दोनों में से आप इसको नाव अब आपके अंदर ब्रेकिंग खेल हो जाएगी तो आप इसके लिए आएंगे। मैंने अपनी दोस्त को कहा, अपने बच्चे से कहा, बच्चे ने कहा तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत हमारे बात है वो और आगे होते चीजें होंगे निगरान कर रही है आप हम लोग जोड़ेंगे हाथ में जोड़ेंगे, मैं कुछ होगा आप सब लोग अपनी का आपकी गर्मी से बहुत आता है बात करेंगे।
तो मैं कहता हूँ कि फॉर्मेलिटी लोग इसको हम जोड़े के नाम से रखते हैं, इसको हम जोड़े के नाम से नहीं जानते। फिर हमारा सौभाग्य है कि लोग सबसे भागने के लिए ऐसा मेरे मामले अपने आप पर लोगों को लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे उत्पत्ति हुई है वहां पे इसको सही नाम से नहीं पुकारा जाता। अपने आप से किसी को आप कहोगे कि होगा तो कुछ होगा क्यों होगा लोग किसका वर्ड है इंग्लिश का तो वर्ड नहीं है इंग्लिश का ये भी हमारा दुर्भाग्य ये भी बड़ी शर्म की बात है मेरे घर की वाले देख रहे हैं वालों ने काम किया जब मुझे समझ में आया कि अच्छा तब हमने उसको अपनी गलती करी उन्होंने बोला योगा तो हमने भी बोला योगा ठीक है ना आज मुझे हमसे और आपसे बोलना है क्या बोल रहे हैं हाँ एक तो हिंदी होता है योग हर योग आपको अभी हिंदी में जाना हमारे साथ है जब समाज में एक टाइम ऐसा सन्यासी बन गए नेगेटिव फॉर्म सन्यासी बन गए नेगेटिव फॉर्म जैसे ले करके तो बिलोंग करना चाहिए समाज से नाता काट दिया परिवार से नाता काट के चले गए पूरा जीवन हो गया लोग तो सामाजिक प्रॉब्लम क्या है ऊपर वाले ने आपको योग के नाम का भविष्य भेजा है ताकि हम और आप अपनी शिक्षण लेकिन जब उनकी टाइम जब आया होता है अपने एक दौर आ गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने से एक दौर दिया गया है बनाया जाएगा मैं भारत सरकार से जानने की चाहता हूँ कभी इंडिया को तो वहाँ भी मत दिया जाएगा तो योगा रहना पड़ेगा इंटरनेशनल योगा डे
तो अगर 14 से कम से कम बनाने शुरू करते तो पानी की पैसे देने से एक तो हम लोग एक बहुत बड़ा दो को लेकर है सर मैं आपसे में सबसे दो करूंगा तो आपको थोड़ा दिमाग में लग सकता है तो माइंड केवल विज्ञान थिंकिंग का बहुत अपना एनवायरनमेंट क्लियर हो गया और अगर कोई बहुत थोड़ा बहुत आता होगा तो नाम और लोगों को बताओ मैं आपसे कहूँ दो बच्चा बना करके मैं आपको कुछ प्रयास करूंगा तो आपके दिमाग में कौन जाएगा दो करने की जाएगी मतलब लोग अपना बनाए एक ही चीज हो गई और ये अपने आप कंप्लीट मान जाने लगे जो उनका एक बहुत छोटा हिस्सा है बहुत इम्पोर्टेंट है योग का हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है पूरा हिस्सा नहीं योग के बारे में योग स्वामी का अंदर आता है राजयोगम बिना राजयोग के बाद राजयोगम बिना और राजयोग के बिना कितना कुछ आपको मतलब आपको बताया गया है लेकिन कभी देखा आप आत्मा कर रहे हो इस लेजर के रहे हो जिसमें बहुत मुश्किल है इसका बेकार राजयोगम बिना मुद्रा और राजयोग के बिना जो है जो मुद्रा है इसका तो हम लोग नहीं देखने की इस्तेमाल करेंगे मतलब है तो जमाने में नहीं लगा कोई चीज आप फाइनल करते हो उसकी लगा दो अगर इसमें हो गया आप कोई भी काम कंप्लीट कर रहे हो इसका भी काम कंप्लीट करो ठीक लगा दो खत्म हो गया ये सब बेकार है लेकिन क्लास में तो कोई चीज आपको राजयोग के बगैर सुविधा नहीं देती फिर तक आप उनकी चीजें सिखा रहे हैं इंसान जो है उसका कैसे युवा का जानवर है सब मेरे चुनाव में जानवर है तेरे जानवर के जो होता है आप कर रहे हैं इसको देखो अपना बिल्कुल जाती है ऐसे ही शरीर आपकी है हमारी बात है हमारा काम और फिर उसके बाद एक आती है इसके बच्चे होते हैं बच्चे बड़े होते हैं ये लोग हमको इंसान है और जो इंसान हम जो आज दुनिया में आपकी नजर बहुत मेरे ऊपर जो इज्जत हो जाती है आज दुनिया से ज्यादा लोग रहते हैं लेकिन अगर साथ जिंदगी में ऊपर कोई इज्जत करेगी आप विश्वास करना चाहेंगे इतना मुझे चाहेंगे किसी का कहना चाहते राइट और रॉन्ग जो मैंने सिखाया और अगर देखते हैं एक बड़े दूसरे के बैठी इसी पर पता ही पूरे लोगों ने क्या किया और तो साथ मैं आपको जानूं कि हर इंसान को रहता है जाए इनकी तरफ से नॉन ये अपने को जानवर की जिंदगी को क्या बच्चा दुनिया का नहाना पीना सब दिया है आप बहुत मजेदार है मामले मैं आपसे जरूर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी दुनिया के संबंध में योग के व्याख्यानों का सवाल जो आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में तमाम हमारे आपसे पेट भरेंगे मैं अभी और बात कर रहा हूँ मुझे आप कानपुर से सर समझे आपको मिल जाएगा अधिकरण के अध्ययन 2 लाख के बाद 2 लाख लोग नीचे है ना मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे आसपास आपके आसपास मिलेगा 3,000 के राम हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है सारा जीवन विकास बस ऐसे ही बिना सबसे मैडम नहीं बोले के साथ बीमारी सब फर्क दिखना है 12 लाख की आबादी 12 लाख की आबादी
हमको जो कहता है हमको या नहीं कहता हमको इस बात को वही करना है वो लग जाता है। मैंने जो मेरी बातें आपसे करी है आपकी दिल में कुछ सवाल करते हैं आप पता को खाने का जो भी कहता है जो हम कह जो नहीं कह रहा है पेट भरा है यानी पेट नहीं भर पा रहा किसी की वजह से काम करेगा हम बड़ा काम करें ऐसा नहीं कर दिया मैं आपसे कह रहा हूँ कि वर्तमान की हम देखिए लिखना में हम कोई भी चीज नहीं समझते ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है बिना रेफरेंस समझ रही है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये हाथ छोटा है जो हाथ जवाब अपनी बच्चे कहा लगा दी अपनी मिनट से जवाब आ जाएगा बड़ा है या सारे इंसान का लगा दूं और तो टाइम मैंने सब पूरी की निकाल दिया तो ये किसी हमें समझ में आने निकाल क्योंकि हम जी रहे हैं पर हमारा ध्यान नहीं ट्रेनिंग हमारे माइंड से बिना जो बिफोर आपको नहीं आ ये हमारी कमजोरी है इंसानों की जो भी कमजोरी इस जीवन के बारे में भी समझ नहीं है कि जीवन आपको दिया नहीं गया है या मेरा क्यों है ये भी आप नहीं समझ सकते जब तक आप उसको रेफरेंस के साथ मिलेंगे बिना रेफरेंस के आई और बुराई में कोई फर्क नहीं रह सकता और यहाँ पे मैं क्यों हुई और बहुत सच्ची क्यों हुई और मैं रात बुराई की सोची देखिए मुझे रात में सकता है और फिर उसके बाद रेफरेंस इतनी तो नहीं कमाएंगे आपके पास आ जाता है और आप पकड़ लेते हो लेते हो कमाई से या बच्चों को पाल रहा हूँ देख रहा हूँ आपकी कोई बात नहीं मुझे आती है जरूरी वो चाहिए आप दिखाओ जगह दिखाओ फिर रोजों के दिखाओ फिर उठने के बाद भी दिखाओ तुमको तीन समझ नहीं आएगी अगर तुमको दिवाली होगा मैं बताना चाहूँगा हमारे आपके है वो आपको दिया गया पर्वोत्तम एकदम आप ये बात बहुत आपको लगेगी हमारे आपके का फायदा क्या है तो हमारा और हमारा समाज आपसे समाज हमारे भावना भी है इसके लिए हम लोग इसके लिए फायदे पहुंचाओगे उनको भी फायदा मिलेगा तुम गंदी बातों का सहन करो दया करो दया करने बोलते हैं लेकिन ये तो दूसरे लोगों की चीजें हैं हमारे हमको आपको क्या
बाकी बेसिकली सिखाया तुम संस्कार करो, तुम दूसरों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करो, तो तुम्हारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होगा फायदा दीजिए ऐसे करके। बाकी तो जिसने हमको ऐसे दिखाया, बचपन में आपको कैसे सिखाया ऐसे खुद ही कर दो करना है, ये खुद ही कर दो, ये भी खुद ही कर दो, करना है पर इसी पर करके भेजे तो अजय तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये भी हर बार ये है कि मैं खुद कर रहा हूँ, ऐसी बात है कि हमको कितने हमारे लिए बताया हम बहुत सारा मतलब विचार करना है पढ़ाई का। तो आप पलट के आपको ऊपर भरोसा हो, पलट के ये नहीं है जो चीज है जो का रेफरेंस जो है वो तमाम इंसानियत, तमाम इंसानों का भलाई, तमाम इंसानों की ग्रोथ की जरूरत नहीं। ये योग का मेरे से आसान परिणाम मेरा बेटा ये क्योंकि हमने आपको जमाना हुआ हमारी कोई नहीं मिली, अगर कहना पड़ रहा है मैं आपके नहीं कह रहा, हम होते लोग कह रहे हैं आप कह रहे हैं आपको बहुत चीज से कहना पड़ेगा, तब शायद कहीं किसी के थोड़ा सा डाल पाओ, लेकिन ऐसे ही ऐसे हमारी आपको करनी है राइट। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ समझना है जो समझने के या मोबाइल वो छोड़ते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी नई बात अगर आप आपने ऐसे क्यों दिलाया फिर आपने उससे दिलाया, फिर मैंने ऐसे 10 बार नहीं 10 बार नहीं आपने 10 बार से दिलाया, लेकिन जब 10वीं बार से दिलाया तो पहले भूल गया या 20 की 2 भूल गए और कहीं एक भूल गए, शाम के से तो ऐसी बहुत अच्छी बात है, क्या कह रहे थे अरे दीदी लगा अब तो दीदी लगा हर चीज तरह से हमारे पास इसमें से 99.9% काम डिलीट कर देता है हमारे कितना लगेगा मुझे आपको थोड़ी सी नई बात समझ में आए भाई ने किसी को बताया था कि जो है वो और जो है शाम को आप उसकी बात आप नहीं पढ़ोगे आपके बच्चों को मिल जाएगा आपके भाई मैं जोर दे रहा हूँ और उनको वहां से देखता रहूंगा तो नहीं दिख रहा हूँ चैलेंज दे रहा हूँ पूरा मजा के एकदम दिख रहा है तैयार है आपको बताइए मैं हमको झूठ से बातें करूंगा कि जो लोग कितनी चीजें होंगे और हाइपर कितनी और कितनी ठीक है राइट ठीक है डेविड रीजनल नाम के इनको जो है वो बातें कहा जाता है कि वो हमसे और आपसे ये बात मैंने भी कही दुनिया में काम है दुनिया में जो हर इंसान अपने आप को अकेला पाता है उसके बाद उन्होंने कहा कि इंसानों के पास कोई रास्ता आज के समझ नहीं आ कोई रास्ता हमारे आप आ नहीं रहा हर इंसान है तो इसमें लेकिन हो जाता है महसूस करता है तो इसका बातें तो तैयार नहीं करते बिना हिस्सा हमारे जीवन में कैसे दिन होगा मालूम नहीं नहीं मालूम
बच्चों को खाता रहता है, उनको पास नहीं देता, ज्यादा दे दिया। हम चाहते किस तरीके का है, दुनिया के तरीके की हम चाह रहे हैं, दुनिया हम जो है वो चाह रहे हैं तरीके की पाथ ऑफ यूनिटी ऐसी हो जाए, ताकि कम से कम यहाँ की बात को हमने आपको सुना, आप लोगों ने सुना, और अब क्या लगता है हम को कहना कितना आसान समझ, कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ भारत ने किया, ये तो हम इस पर बड़ा गर्व करते हैं, भारत ने किया अपनी जीवन में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप करिएगा नहीं, बहुत सी बातें आपकी नहीं लगेगी, बहुत मिलेगा आपको, और आपको नहीं बोला अपने आप को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन गुजर गया, मेरे पास सबसे पास में दुकान बोलेगा अपना, मैं अपने को पहले तुम्हारा बाद में आप नहीं तुम्हारा नाम कुछ करेंगे, बात और यूनिटी बहुत अच्छा कर रहा है, सामने देखो देखा नहीं आज मेरे बात कर रहा हूँ, देखा नहीं खाना इसके अलावा नैरो लिमिट्स ऑफ फैमिली होमलैंड रेस एंड इंटरेस्ट का ये योजना जो है वो भारत से ही लेकिन फैमिली क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होती है अधर्म होती है, क्या है तो आप लोग नहीं कहोगे, हाँ आपकी 10 के टाइम का प्रॉब्लम है, राइट शिक्षा में हो रही है, मैं देखिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको कहोगे ना बात करिए, क्या है जो मेंबर सबसे कमजोर रह जाता है, मैं भी बात कर रहा हूँ, देखिए मुश्किल वो है अपने घर में देखिए, हमारे घर में सबसे कमजोर मेंबर रह जाता है, इसकी सारी जरूरतें सबसे पहले नहीं की जाती, राइट कर रहा हूँ, हमारे घर के अंदर जो सबसे कमजोर मेंबर रह जाता है, चाहे वो सबसे छोटा बच्चा हो या बूढ़े माँ बाप हो या बीमार होंगे, तो सबसे पहले इसकी जरूरत की जाती है, इसके बाद उन लोगों की जरूरत की जाती है तो पहले स्टेप लीजिए, राइट और रॉन्ग। अब आप देखिएगा इस होल कौन 2 लाख लोग हो रहे हैं, कमजोर पेशेंट कौन है, काफी मुश्किल है वो, उनकी जरूरत पहले पूरी होनी चाहिए या सारे मुश्किल पहले पूरी होनी चाहिए, बोलना उन्हें पता नहीं चलेगा उसका अंदर भी है, मैं नहीं महसूस कराना चाह रहा हूँ, इतना नहीं इतना बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हाँ मैं ये बातें कहने की बात सारी बातें सच कहूँगा, बाकी जो है एकदम अंदर है, इसकी शुरुआत यहाँ से आपको करनी पड़ेगी, नारा लगाना बहुत आसान है, शुरुआत करनी पड़ेगी तब भारत बन जाएगा, कहाँ से पहले समाज में जो लोग ऐसे भी कमजोर रह रहे हैं उनकी जरूरत नहीं, पहले समाज में एक तभी है ना, इनकी जरूरत नहीं है, irrespective of family, homeland, race, and embrace the whole of your health. पहले तो उनकी जरूरत है, जरूरत कमजोर रह गए, किसी को वजह से रह गया, पहले उनकी जरूरत है करो, फिर पहले करो, ये बात है जीवन का पहली बात है। बहुत अच्छी बात है, आप मैं एक बात कर रहा हूँ, जो खाने के लिए है और दूसरे बड़े एजुकेशन की कोशिश करी ना, पता नहीं हमारे माँ बाप हमारे जीवन गुजार रहे थे, हमारा आपका जीवन कैसा है आज हो गया, बहुत से लोग होंगे आप 50 बोल के कारण शराब को बोलते रहेंगे, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना, हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमको जब और बात करेंगे, वही है हमारी पॉइंट,
तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो है वो चीजों को करने से क्या लगा, पूरे क्या लगा। और मैं ये लगता था कि आपको डाइवर्जन हुआ आपका बहुत जरूरी है इसका, राइट। देखिए हम लोग जो है वो इंटायर ह्यूमन रेस हमारी इंटेलेक्ट इंटायर ह्यूमन रेस हमारी इंटेलेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि इंटेलेक्ट को कैसे कैसे देती है इंटायर ह्यूमन रेस के लिए तो करना ही चाहिए, उसके लिए हमको लोग टीचिंग चाहिए, राइट। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग इंसान जो है वो कितनी पार्ट हो जाएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे मैडम मुझे जरा सा इशारा कर रही बात को जमा कर दूंगा, बात तो चलती रहेगी बात ये लेकिन ओवरऑल मेरा जो है ये इसकी अवस्था तो रहता है और डिटेल जो है वो क्या करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन चीज अदरवाइज हम लोग जो सेवा करेंगे वो पूरे पूरे तरीके से सेवा लगता है। इसी में से बहुत छोटा सा पार्ट आपके पास निकल गया है। हम सब इंसान जो है वो तीन पार्ट बोल के बनते हैं, तीन पार्ट नहीं बनेंगे। उसका अंत जो है वो हमारे कर्मचारी है, लेकिन भाषा दूसरी से मेरी भाषा दूसरी है, बात एक ही होती है, भाषा में अलग अलग होती है। सबसे पहला पार्ट हमारा आपका है फिजिकल बॉडी, तीसरा पार्ट है हमारा आत्मा। अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं रूम कहा जाएगा, कहीं स्पिरिट कहा जाएगा, कहीं आत्मा कहा जाएगा। ये आत्मा जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन आपको क्लियर ना हो। आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से आया हुआ करंट है ना, परमात्मा की तरफ से आया हुआ है, ये इस आत्मा के बारे में योगेश्वर किसी तरह बात करती है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अणु है, आत्मा अणु अणु है, आप उसको चेंज नहीं रहा जो परमात्मा आपको सबको मिला हुआ और वो हमेशा है लोग का अलग डिफरेंस तेरा है अनुभव वो अलग किसी तरह की बात करें, राइट। आत्मा क्वालिटी है आपका, उसको अच्छी बयान नहीं कर सकते, आप उसको पूरी बुरा तो करेगा पूरी, राइट। हमेशा से पूर्ण कंप्लीट है, कंप्लीट निष्कर्ष हो सकता है, कंप्लीट निष्कर्ष आप उसके अंदर एडिशन करके एग्जीक्यूशन करके एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कर सकते हैं उसके अंदर परमात्मा ये आत्मा तो ऐसे है हमारे पास में तो सुना होगा इसको अलग अलग नाम से बता नाम से बताया जाता है। जैसे किसी चीज को जो है वो मन के नाम से चाहिए, मन या माइंड मतलब जहाँ पे बहुत क्रिएट होता है, जैसे बहुत क्रिएट हुआ आपने कुछ सोचना शुरू किया उसको पहले मेरे मन में क्या आइडिया आया, मेरा मन ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोलते ना कहीं तो और इसको बोलते जो मतलब अहंकार, आपकी जमीन का अहंकार, कृषि का अहंकार, कपड़े का अहंकार, फैमिली का अहंकार, अपने दोस्त परिवार का अहंकार, इसको बोलते हैं
है वो एक ही अलग अलग नामों से निकाला जाए। इसी को कहते हैं कॉन्शियस कॉन्शियस नाम है जो जो किसी पास कोई और उसको आप लोगों को ये बताएंगे जो है ये क्या चीज है, ये अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग नामों से निकाले जाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब आप अपने से परे तमाम इंसानों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। अपने से परे ना तो अपनी है, लेकिन अपने से परे हमने जब करना शुरू कर दिया सब लोगों का फायदा, अपने फायदे के साथ साथ सबका फायदा जब करना शुरू कर दिया तो ये पॉइंट है जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको सीख लो, जो भी टर्मिनोलॉजी आगे चाहिए उसको सीख बोलते हैं। लेकिन आपने से एक मैडम अगर सेट देगी और दूसरा अगर आपने सीखने में भरी देगी तो मैं खत्म कर दी, इसका मतलब नहीं उसका पता नहीं। जैसे आपका मेहमान कोई आया और आपके बच्चे से हम चाय लेके आने लगा तो हम क्या बोलते हैं राइट सिर्फ असल में देखो आप तो आप थे अपने आप को कहते ना मैंने के काम किए और जहाँ पे मैंने ऐसा बोला ये नहीं बोला मेरी मतलब अंदर से उन्होंने वाइफ को किया मोटिवेट किया प्रेशर बनाया एक मतलब आवाज बाहर निकली ये मीडियम से आप काम कर जाएंगे इसको मैंने क्या किया काम किया नहीं मैंने किया निश्चित जो है ये काम करता है सारे आइडिया सोचता है भी करता है भी करता है ये सोचने के बाद फिर फिजिकल बॉडी को इस्तेमाल करता है ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे यहाँ जाना है मैं अपने पैरों से पैरों को इस्तेमाल करके यहाँ जाएगा इस तरीके से हमारा हम लोग तीन पार्ट फोर से बने एक हमारा जो है वो शरीर है, एक चित्त जो है वो संहार बाकी बहुत अच्छे बताया गया है उनको आप जो हो तो सवार हो अपनी बॉडी के ऊपर राइट। ये सवार है फिजिकल बॉडी हमारी जो है वो सवारी है इस सवारी के ऊपर सवार होकर हम हमारे दिमाग कितने भी काम कर रहे हैं ये सारे काम हमारा ऐसा राइट। लास्ट ही पतंजलि ने दो लोगों ने दो लोगों को समझाने के लिए हमको आपको एग्जाम्पल दिया योगा चिंता भक्ति होता लोग क्या करेंगे चित्त के अंदर जो स्थितियां हैं इनकी रोकथाम कर लो इसका प्रोसेस नहीं करोगे ये योग कहलाता है। ये जो दृष्टि वर्ड है इसको हम रिलेटिव वर्ड से क्या है ये दृष्टि वर्ड जो है ये राष्ट्र से बना हुआ है समझते हैं हाँ ये बताने के क्या है अपने रही और क्या पूछा गया है देखो कभी भी अपनी जिंदगी को ऐसे मतलब उसमें मत गुजारना मतलब जैसी सुबह करती वैसी शाम करनी ये ऐसी सुबह की वैसी शाम फिर उसका सुबह हो गया वैसी शाम जैसी सुबह और वैसे शाम सर्कुलर मोशन में चले चले काम होते ऐसे कौन करता है ऐसे हिम्मत गुजारता है कौन करता है ऐसे कौन हिम्मत गुजारता है आप बताओ हिम्मत गुजारते हैं अरे आपको पड़ोसियों में गुजारना है कौन बोलो ना मेरे को प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम की बात है सब कुछ है सब बिल्कुल नहीं है हां बताओ मैं आपको पड़ोसी के लिए उदाहरण बस ऐसे कौन बोलो जानवर कितने की मतलब ऐसी बात है सारे एकदम वैसे चल रहे हैं जैसे वाला ऐसा नहीं कभी शाम है ऐसा नहीं फिर रात में ऐसी जो आपका ही कुत्ता फिर वैसे कुत्ता 7,000 साल से बदली है आपको बताओ
10-12 साल से हिंदी नहीं है, अब तो एक चीज से आगे बढ़ी जा रही है, आगे बढ़ी थी थोड़ी बड़ा ना 10-15 साल पहले मेरे और आपके बीच सब लोग सबके पर जो है दिखाओ में रहेंगे क्या आज तक एक मिनट और ऐसा मैंने इधर की बात खत्म करो इस बात को लेकर मैं आगे ले जा रहा हूँ और बात करने सारे बच्चे टीचर के लिए उससे ज्यादा जरूरी है कि हम चीजें नहीं बना रहे हैं मतलब ऐसी भी लर्निंग मेरी आज है इसमें कम से कम एक लर्निंग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक लर्निंग इसमें ऐड कर दो तो सब मिनिमम इंसान के कंडीशन पे आओगे वरना जनरल कंडीशन रहेगी जैसे धीरे धीरे ऐसी बीमारी करती आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज सबसे पहले ये है बात में आप लोगों के लिए है रोज खाना अपनी लर्निंग में एक नई चीज ऐड करते रहिए लगातार आप लगातार ऐड करते रहेंगे आप एक काम होगा है उसमें आप उनको आगे सिखाते रहिए आप का ख्याल जरूर करिए जो आपके आंदोलन करते हैं और इसी वजह से कमजोर हो रहेंगे तो इसी जिंदगी को अपनी रचना बनाने की कोशिश करिए अपनी जिंदगी के बाद अगर ये दो काम आपने कर लिए तो आप यकीन करिएगा तो आज की डेट में जाएगा वो खराब हो जाएगा उससे जितना मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगा को जोन बोले योगा की जनरल की सबसे इजी है और आजकल के जीवन की बीमारी को जीवन हो जाता है फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार मैं आगे कॉलेज में चर्चा थोड़ा हम सभी जानते हैं अच्छा
और ये परिस्थिति वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका में बहुत भारत अमृतकाल की बात अमृतकाल हम बहुत सारी समस्याओं के समाधान बता सकते हैं पर हमारा भी जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेगी जहाँ से रास्ता नहीं हो और वो समाधान समझ रखता है वो बहुत का जो अधिकार शांति निर्माण और परिवर्तन इसके अलावा साइकिल मैं थोड़ा मुद्दा उत्साह और मिलाकर और प्रेरणा और परिवर्तन का old order changes पुरानी चीज को जानने में मिलता है नई चीज को आने में मिलता है और इन दोनों ये जो परिवर्तन जब होता है बहुत ज्यादा शायद ये बड़ी समय में जब तो उसमें तो हम कोई समय परिवर्तन जो हम इस तरीके से जो मेरा मेरी फोकस पॉइंट था उनसे क्या हमारे बच्चे यहाँ सबसे छोटा सा समाज क्या है
सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में सारे समय देखना और फिर देखना करता है वहां पर नहीं पाया जो बहुत सारे हमारे सामने आए आप
बाहर भी बताया कि कंपैरेटिव मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करेगी। फिर कहा मैं अपने माता पिता को नहीं दिखा सकता, मेरे को सोशल मीडिया कहानी नहीं बताना बाहर एक बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखभाल और बहुत सारी आगे लखनऊ से डॉक्टर नंदिता कांग्रेस नंदिता आपके नंदिता
May I start my presentation, madam? Yes, sir. 1 minute. May I start, madam, now? Yes, sir. Okay. Thank you very much, respected Professor Anju Chaudhary, madam. And I sincerely acknowledge Mahila Mahavidyalaya PG College, Kanpur, to giving me this opportunity to be a part of this prestigious program. And from the core of my heart, whatever the experience I have gathered during my uh, work profile at Indian Institute of Forest Management and the experience what I'm going to share. This is a long-lasting experience that relates and deals with the work that I have carried out. And the important work that what I have carried out, this is related to the work of how we are going to motivate and aware the young generation so far as the lifestyle for environment is concerned. And since we have in ministry, we have gone through the G20, then we have gone for the Urban 20, and now we are looking for this Youth 20. Youth 20, some emerging issues and challenges are there, and way forward is there. So I I have a deep respect and honor all of the distinguished audience and the delegates, those who have gathered there in this prestigious program. Here, when we talk about the Catch the Young for Lifestyle for Environment, here we are not only focusing in urban area, but rural area too. How we are going to motivate and catch the young for lifestyle for environment? Because lifestyle for environment means changing dimension among youth and young generation related that how their attention should be distracted from a screen and shifted to the out, outward environment. The basic thing is that whatever the work and the thing I have presented here, that is based on the 8 training programs that I have conducted for Catch the Young for rural environment in the rural areas. And now we are concentrating on lifestyle for environment. Lifestyle for environment means which sort of the lifestyle should be there. This could minimize the damages caused to the environment, because burden also means an increasing cost. And increasing cost is a reason that why we require environment. And environment is the thing that once it is going on, keep on polluting, it is keep on. But when we think that when the environment will be in equilibrium, means in a condition where we should minimize the pollutant level. Therefore, it is the prime role and responsibility of the young generation that how they are going to minimize the damages to our present environment.
And in today's contemporary world, the role of youth has been recognized as a torch bearer of the future development of our nation. The way of utilizing the hidden potentialities of young generation for development is the main concern and evident. And it is evident from the census survey report that youth constitute 35% of the population. There are no two opinions about the hidden potential and about the young generation, the political stability, economic development, academic development, and natural resource management, science and technology, etc. in the field of development depends upon the role and contribution of the youth. This work is an outcome of the conducted activities 50 for lifestyle for environment in Etawah district and 50, some activity, 25 activities were there from Lucknow, combining the activities of Etawah and Lucknow. Total 50 activities have been combined. And here we are going to demonstrate with the help of photographs, videos clipping what we are having, and we are going to show. And these various activities which were covered under this awareness generation program with the campaign are having the following objectives. First, to assess the role of young generation in environment and conservation of resources in rural areas, and sharing of the views and vision of young generation towards present strategies of lifestyle for environment, and role of young generation toward climate change and global perspective, to organize cycle rally for sensitizing local people towards lifestyle for environment, and to assess environmental and climate goal for sustainable management of resources. Generally, when we talk about the green budgeting is a part in the combination of attaining environmental goal and climate change goal. To have this budget outlay for this, it becomes very prominent that how we are going to utilize and where we are going to spend this budget, green budget, so far as sensitizing and attaining the environmental and climate change goal. Therefore, whatever the expenditure the government is incurring, it is related with that how we are going to maintain and attain environmental and climate change goal. Therefore, at last, the exploring possibilities of young generation relating their knowledge with clean and green environment. These were the objectives. On this, we have conducted more than 8 workshops in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and somewhere at Etawah and somewhere at Lucknow. So this is the collective effort of all these activities that what I'm going to present here. This is the first activity which is coming from sustainable conservation of pond, removing weed from pond. This has now become a great menace to our water bodies, that how the cleaning should be there in urban areas or in rural areas. Specifically, these are the activities that we have conducted there in Etawah district in rural areas, that they are cleaning and weed eradication is there for the pond and the sustainable management of the fisheries and all. Then, the second activity deals with the sustainable harvesting of the fishes for lifestyle for environment and aquatic animals. This is very important because at the one side, when we talk about the water quality index or water pollutant labels, these are going to affect not only the water bodies, but also the aquatic animals which are living in. Then third activity is related to open grazing livestock in agricultural field. This is the another important activity which deals with the livestock management of bovine and non-bovine animals, and what is the per capita production that land is giving in the form of supply elasticity of regenerative capacity of this of feed and fodder for the cattle, and how these cattle are going to adjust with the condition of reducing grazing lengths and all. Therefore, this activity is very important that where this cattle population is going to survive. This is also a part of the livestock lifestyle for environment, specifically in rural areas. Because fodder is the prime requisite and the cost of fodder increases automatically in summer season, because green fodder is available at the time when a rainy season is there or some other seasons are there, but dry fodder becomes very difficult at the time and the stressful selling of this activities are there.
Then we are seeing as the water body is going to be improved, you are seeing that the conservation of the bird, crane, heron, nearby water bodies, this is also a part of the lifestyle for environment, that how the young generation should be aware that the earlier the birds which are coming and moving nearby the water bodies, suddenly they have been moved away. But in at that place of Itawa, I am able to find this species which is as seen on the screen. Then another activity for lifestyle is related to organizing cycle rally. You are seeing the number of pictures there. Then the rural youth is there with us, and we are having the banner where we have conducted this activity. This cycle rally is organized for 2 or 3 kilometers in the rural areas to spread the message that riding on the bikes or riding or just driving the car is not the solution towards the lifestyle of environment. There was shifting from fossil fuels to the manual or to the physical exercise that what we are going to get in cycle rally. So this activity is documented there. The cycle rally is very important. Myself is standing with the youth of Itawa district, Uttar Pradesh. Then the weed removing is another important thing which grows on unmetalled road. This is also a part of the lifestyle which disturbs the transportation, because transportation is one of the prime objectives so far as the lifestyle, changing lifestyle is concerned. Then with this banner, we have gone with the youth and just remove this all weeds on the unmetalled road, और जैसे कच्चा सड़क बोलेंगे उस पे से निकाला गया करीब 500 meters. Then we are having the another activity, that shifting of food habitats, shifting from this wheat to coarse crop, that is the maize, and biofertilizers are used for sustainable production and changing food habit in the youth and young generation. So here we are, you are seeing that one maize field is there where these all youth are gathered, and there we are talking about the sustainable production and changing food habits, shifting from uh, other crops to coarse crop, that is bajra, makkah, jowar, etc. Then another feature is related to the pledge taken by the local people for lifestyle for environment. Here are the youth, those who are taking the pledge for lifestyle for environment. And these all youth have obtained their certificate online from Ministry of Environment and Forest, Government of India. Then another thing is that every youth is fed up and they are keep on working on the screen, laptop, then mobile screens and all. We have spent some time that outdoor activities like related to the sports outside the houses. That is very important for changing the lifestyle of young generation. And one kabaddi match is organized so that their attention should be distracted from mobile and others. And this is the another awareness generation activities that what we have organized outside uh, outside the outside or outdoor games. Then another one is the people have totally forgotten the lifestyle, that they feels very guilty in walking, but the run for environment is very important. This is also a part of lifestyle for environment, and you are seeing that on your screen that we have organized 400-meter race for this activity, and later on these all students are provided tea and snacks. And then thereafter, cleaning of the orchard. This is another very important part, that the 3 day seminar Buddha Sammelan was there, and the lifestyle for environment and cultural and traditional values, these are also the important part of changing lifestyle. Then energy conservation is another part of the lifestyle for environment. Diesel, petrol, then moving to CNG, now e-rickshaws and all. These are the team, those who have shifted from diesel, then petrol, then CNG, then e-rickshaws are there. This is also plays a very vital role so far as the environment conservation or environmental protection is concerned, to minimize the damages caused by air pollution or the pollution which emits as CO2. Then this is the utilization of underground water resources. That earlier there is the water feeders are there,
which is constructed of basically of soils and all, it consumes a lot of water and takes a lot of time to reach in the field for irrigation purpose. Now, there is another lifestyle has been changed that is related to conserving underground water resources. So therefore, they have connected out this PVC pipe, and this water is directly flowing in the field, and they are saving, not only conserving the water resources, but also saving the wastage of water too, underground water resource management. Then another one is removing plastic waste from agriculture field. This has become another menace in rural area, that the people used to throw the polythenes here and there, and the plastic waste is keep on generating. Earlier in marriage function, only dona petals were available there. Now they are started substituting this paper cups and other things, so that to eradicate this plastic waste from this places. Then another activity we have organized at that is Chambil Ravine Basin, that is related to clean green banks, and it should be it should be plastic free. Third one is, this is the wildlife sanctuary, where the underground water, crocodile, and this dolphin fishes are there inside. And this is just a walk to transact in that area. And this is also a part of the lifestyle for those people, those who are living in the Chambal ravines. Then, after this, we have moved to the Yamuna River, where we have seen a lot of pollutants are there, but this how to eradicate and remove this pollutant in a high temperature, that is, our temperature will be near about 44 or 43 degrees Celsius at the time when we have visited the Yamuna River basis, that why the clean green rivers are required for aquatic, as well as these are the lifelines of our agriculture, as well as domestic use of the water in that side. Then we have come to the another important thing, that is canal side old plantation, that is the Lower Ganges canal. And this Lower Ganges canal is there in our district. So we have just removed some weeds and some plastic waste. What we have found there, the colony which is settled down nearby the canal, the direct pipe is bathroom or waste pipe is directly moving inside in that canal, and this is also polluting the canal water too. And thus, the removing of weed, sustainable use of irrigation, developed colony nearby the canal site is another big menace which is creating the free flow of the water and with a high level of pollutants and all. These are the traditional and cultural values that we are having a very good opportunity to be a part of this. And what we have seen, they are intact with the traditional and indigenous and cultural values, and this is a part of the lifestyle in that place. Then at Lucknow, this is the place taken at that place in ISS campus at Lucknow. All these delegates are there, and more than 300 people are there in this auditorium, that they have taken a pledge for lifestyle for environment. Then these are the campus visit at computer centers. Then this is the awareness activity connected with facility of computer and media, that what would be the lifestyle of media and computer, that what is the quality of the processor, and how the waste, electronic waste generated, how it is can be utilized or reutilized. Then awareness activities we have taken at the place that is there in teak plantation, that how this teak plantation is going to be maintained in the college, this college. And sustainable mango orchard of the campus means how you are going to manage these fruits for the changing lifestyle of the young generation. And these young generations are not just plucking these mangoes or just giving the harm to the just small mangoes, that they must be ripened, and the regeneration should come up in the form that mango plants can be sold later on by these activities. Then awareness activities there, that is related to volleyball ground. The students are there, and they have played a volleyball there. That is a part of sports, sports for lifestyle for environment, outdoor sport. Then lawn and garden management by the authorities and the student is another important feature of any college, of any campus, because this is a part which creates aesthetic beauty and recreational values to the college and give the aesthetic feeling to the students related to educational values.
And then cleaning of the water bodies is very important, such as a fountain nearby. And this is a part of the lifestyle for environment. And sustainable water resource management in campus through bore well. This is very important because in many of the college campuses, we are having the bore well, but sustainable use of the water is very important. For this purpose, we should have to avoid the wastage, and the resource should be fully utilized. For this, our young generation can play a crucial role. Then plastic waste removal during seminar in campus with Director Shukla Tarun, RBP Singh, Deputy Advisor, New Delhi, disposal of local body of municipal corporation, that how this circular economy grows and develops by using and segregating the waste. Then again, the sustainable use of electricity and power in the classroom and hall, where ACs are there, fans are there, and electricity is going waste. We are paying the bill for this. And the paying the electricity bill means increasing cost on the environmental burden, because this too emits the CO2, and that's also affect the climate as well as environment. And moreover, to attain this sustainable goal, this is very important that how we are using the energy efficiency in efficient ways. Then we have also conducted an activity at the Gomti River, which was found that is highly polluted river, but because of the intervention of BMCs and Lucknow authorities, this river has been cleaned and the bank has been developed on both sides, and the lifestyle has been changed for the morning walker and other people to see the aesthetic beauties and all. With this, then we have moved to the plantation nearby the riverside. Mixed tree species and shady tree species are there. Then social and religious activities near Gomti River Ghat. This is another important thing where we are going to go for this religious disposing of flowers, rock, and other things, and that how this is going to be polluted. And but since we are having the religious and the activities are there, hence this is a part of the cultural and social and religious activities is also a part of the our lifestyle systems. Then sustainable livelihood of vendors and hawkers nearby that place, and this transportation is seen there, and the tourists are coming. This is also a part a lifestyle for, because we have seen that the number of tourists are moving from hot areas to the peaceful areas where good environment should be there, climate should be good. But the thing is, everywhere, because of the influx of these tourists and others, is going to affect this uh, environmental strength, environmental things. And how to minimize the pollutant level, this has now become a Herculean task. Another thing is that is changing transportation in urban areas, shifting from petrol to battery operating rickshaws and all. This is another changing lifestyle of environment, so that the emission levels should be under control, because e-rickshaws and others are the transportation methods by which the lifestyle of people are changing. Then incoming of the birds nearby the Gomti River and infrastructure developed by Lucknow Authority, plastic waste disposal, etc., is very important, so that the river should be clean and that tourist place should be clean. Then the last and the final thing that what we are coming for the conclusion, that the historic movement, whatever we have seen, Bada Imam Bada, Chota Imam Bada, and the maintenance, this was maintenance department is there at the spot, and tourists and local peoples are coming. I'm there with the team, with the all senior officers of different areas, that what would be the lifestyle of those tourists, those who are coming, and they have to preserve their heritage and culture. Then Chota Imam Bada, again, this is very important. And lastly, we are coming to the Rumi Darwaza, that is the sign and the proud of Lucknow city. And this park management and this garden management is very important from the point of view of catch the young for environment and for lifestyle, because lifestyle changes with this or historical thing that what we have discussed just now. At last, I'm concluding my lecture. At last, all the workshop campaign concluded with the recommendation that it is essential to involve young generation for better management of lifestyle of environment for today's conservation for future generation. This is the most important thing, or else we are going to lose these things in future.
This is the high time to motivate and recognize the hidden potentialities of young generation towards lifestyle for environment and sustainable natural resource management. Then I sincerely acknowledge authorities of IAFN, Professor Chaudhary Madam, Anju Chaudhary Madam, Principal and organizing team members, all faculty of Mahila Mahavidyalaya PG College, Kanpur, UP. This study is an outcome of the awareness activities carried out in Etawah and Lucknow during May 23 for lifestyle for environment. I acknowledge the youth of both the places. I also acknowledge Dr. A.K. Singh, Deputy Director, Rescue, for which we have learned a number of the things, and he is also a part of this changing lifestyle for environment. And these are the references that what the work we have done. And this PPTs and this will be submitted to the madam. And thank you to all of the respected delegates, participants, principal of the college and faculty member of Mahila Mahavidyalaya, PG College, Kanpur, that they have given me a very beautiful and a wonderful platform to share my experiences and the views. So thank you very much for giving me this important platform. So my side, thank you all and thank you very much for listening patiently for me. Sorry that we are there in the medium of English. That's why I'm unable to give my lecture or deliver my lecture in Hindi version. So I do apologize for the same. Thank you very much. Thank you very much, madam. I'm unable to hear your voice, madam. Thank you, madam. Please allow me to leave this meeting now. हाँ महाराज ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं अभी आ रहे आ रहे
Respected members of the organizing committee of महिला महाविद्यालय पीजी कॉलेज, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके नेशनल सेमिनार में एक रिसोर्स पर्सन की तरह एक्ट करूं। मुझे आपने जिस टेक्निकल सेशन में बोलने का अवसर प्रदान किया है, वो टेक्निकल सेशन रिलेट कर रहा है रिगार्डिंग दी पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट और यूथ के द्वारा क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की जा रही हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, और इवन ऑब्जर्वेशन से ज्यादा वो एक एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन रहा है, और वो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन मेनली बेस्ड है मेरे उस ऑब्जर्वेशन पे जो मैं इतने प्रोफेशनल लाइफ से पिछले कुछ सालों से जुड़ी हुई हूँ। यूथ के बारे में जो मेरा व्यू है और जो वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा अवेयर है, और उसको अवेयर करने में जो इंटरनेट है और जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज्यादा रोल जो है वो रहा है। इनफैक्ट अब तो मैं ये भी महसूस करती हूं कि यूथ बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के, बिना मोबाइल गैजेट्स के एक मिनट भी अपनी लाइफ जो है वो नहीं सोच पाता है। इवन जब हम एकेडमिक फील्ड में देखते हैं तो एकेडमिक फील्ड से क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं, और एकेडमिक फील्ड में ही हम बहुत अपना एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन इतने सालों से देते आ रहे हैं, तो जो फील होता है वो ये है कि आज का जो यूथ है वो डेवलपमेंट तो चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट चाहता है अपने तरीके से। आज के यूथ में वो पेशेंस नहीं दिखाई देता है जो पेशेंस चाहिए है कॉन्क्रीट डेवलपमेंट लाने के लिए। आज का जो यूथ है वो बहुत हरी में रहता है। आज का जो यूथ है वो बात भले ही सस्टेनेबिलिटी की करता है, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ ही काम करना जो है वो पसंद करता है। यूथ रिजल्ट जल्दी चाहता है। यूथ ये चाहता है कि जितना भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस कंट्रीब्यूशन के बदले में उसको रिजल्ट जो है वो जल्दी मिले। यही चीज वो अपनी स्किल डेवलपमेंट में भी करना चाहता है, यही चीज वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी करना चाहता है। आज वो मेंटर्स के तौर पे, गाइड्स के तौर पे रोल मॉडल्स तो कम ढूंढता है, आज वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के सहारे अपने आप को इम्प्रूव करने पर ज्यादा विश्वास करता है। उसी के साथ साथ यूथ के बारे में जो मैंने देखा है वो ये है कि आज का जो यूथ है वो ग्लोबलाइज होने में बहुत विश्वास रखता है, वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने में बहुत विश्वास रखता है। वो ये चाहता है कि जो कुछ भी वो सोच रहा है, जो कुछ भी वो देख रहा है, जो कुछ भी वो करना चाह रहा है, वो जल्दी से जल्दी जो है वो दुनिया को पता लगे। और उसी का नतीजा होता है कि आज आप इंटरनेट को देख लीजिए, ब्लॉग्स की आपको भरमार मिलेगी, और ये ब्लॉग्स ज्यादातर लिखने वाले भी कौन है? यूथ हैं। हर वो चीज जो उनके दिमाग में चल रही होती है, हर वो चीज जो वो करना चाहते हैं, हर वो चीज जो वो जानना चाहते हैं, इस ब्लॉग्स के माध्यम से वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं। ब्लॉग्स
कई बार बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं, कई बार आप पढ़िए तो उनमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी देखने को मिलती है, जो ये दिखाता है कि यूथ जो है, स्पेशली वो यूथ जो कि डेवलपमेंट को लाने में सीरियसली जो है वो सोच रहे हैं, वो उनके अंदर इनोवेटिव अप्रोच भी दिखाता है, वो क्रिएटिव अप्रोच भी दिखाता है। यूथ क्रिएटिव भी होना चाहता है, बट क्रिएटिव भी वो उतना होना चाहता है जितना कि उसको ठीक लगता है। और उसी के साथ साथ जो मुझे लगता है कि आज का यूथ जो है वो पार्टिसिपेटरी वाले अप्रोच के साथ काम करने में ज्यादा विश्वास करता है। उसी का नतीजा ये होता है कि आजकल आप देख लीजिए यूथ की एक्टिविटीज कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। स्पेशली जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखती हूँ कि आजकल का जो यूथ है वो पढ़ाई भी करना चाहता है तो एक्टिविटीज के माध्यम से। उसको आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दीजिए, एक्टिविटीज के माध्यम से वो काम करना चाहता है। वही आप उसको क्लासरूम में स्टडी कराइए, क्लासरूम की टीचिंग कराइए, वो उनको खास पसंद नहीं आती है। और इस एक्टिविटी ओरिएंटेशन के माध्यम से यूथ कई बार अपनी क्रिएटिव अप्रोच, अपना जो इनोवेटिव अप्रोच है, अपनी जो नोवेलिटी है, उसको भी ये बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। और उसी के साथ साथ यूथ में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूथ भी हैं जो कि देश के बाहर चले जाते हैं आगे पढ़ने के लिए या नौकरी करने चले जाते हैं देश के बाहर, बट आफ्टर certain period of time they realize that they should come back to their own country and carry out their development works here। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। आज ऐसे फार्मर्स हैं जिनको कि हम फार्मर्स तो कहना ठीक नहीं लगेगा, जो कि अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं एग्रीकल्चर का। एंटरप्रेन्योर किस सेंस में? वो कमर्शियल स्केल की फार्मिंग कर रहे हैं और उस कमर्शियल स्केल की फार्मिंग में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस भी अपनाते हैं, वो सस्टेनेबल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस भी अपनाते हैं। और उनको अपनाते हुए वो जो है आज करोड़ों का टर्नओवर जो है वो कर रहे हैं। करोड़ों का टर्नओवर करने के साथ ही साथ ये यूथ, अगर आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, फेसबुक वगैरह पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, वो अपने प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी भी करते हैं। तो इस तरह से यूथ में जो है लोकलाइजेशन वाला पर्सपेक्टिव भी बहुत दिखाई दे रहा है और उसी के साथ साथ लोकलाइजेशन वाला अप्रोच अडॉप्ट करने के साथ साथ वो ग्लोबली भी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने आउटपुट्स के लिए वो ग्लोबल मार्केट जो है उसको टैप करना चाहते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो आज का यूथ बहुत इम्पेशेंट है। आज का यूथ, जैसे मैंने आपसे बोला, शॉर्ट साइटेड पर्सपेक्टिव के साथ ज्यादा काम करना चाहता है। क्विक रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है, इस सोच में उसका विश्वास रहता है। इस वजह से उसमें इम्पेशेंस लेवल जो है वो ज्यादा हाई है। इसी के साथ साथ क्योंकि वो ऐसी जीवन में लाइफ लीड कर रहा है जो हमें भागादौड़ी वाली दिखती है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ऐसी लाइफस्टाइल में या ऐसे लाइफ सिनेरियो में आज का जो यूथ है उसमें स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई दिखाई देता है। और इस हाई स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए कुछ यूथ जो हैं वो तो सही रास्ता चुन लेते हैं, इन अ सेंस कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, उससे वो जुड़कर अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ यूथ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को ड्रग्स में लगा देते हैं, ड्रग्स का एडिक्शन कर लेते हैं, अल्कोहल का एडिक्शन कर लेते हैं
और ऐसा करते हुए अपने आप को तो रियून करते ही करते हैं, फैमिली को रियून करते हैं, सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स जो हैं ऐसे यूथ लेकर आते हैं। आज का जो यूथ है, जो मुझे लगता है वो ये है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग में कम विश्वास रखता है। वो जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, वो मोबाइल टेक्नोलॉजीज पे इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है कि कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जानना हो, वो पहले मोबाइल देखता है, मोबाइल खोजता है, फिर जो उसमें कहा गया होता है उसके हिसाब से करता है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि एक होता है अपनी बुद्धि लगाकर कुछ काम करना, फिर उसमें से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे सीखते हुए कुछ आगे करना, क्योंकि इम्पेशंस ज्यादा है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिपेंडेंस है मोबाइल टेक्नोलॉजीज पर वो एक्सेसिव हो चुका है। इसी के साथ साथ जो इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो ये है कि आज का जो यूथ है उसमें एथिकल डायमेंशंस की जो डिग्री है वो भी कहीं ना कहीं काफी लो है। आज का जो यूथ है वो लिहाज कम करता है। आज का जो यूथ है वो ब्लंट ज्यादा है, वो सीधा मुंह पे बोलता है। आज का जो यूथ है उसके अंदर जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एल्डर्स के प्रति, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों के प्रति, जो सिंपैथी होनी चाहिए दूसरों के प्रति, एम्पैथी होनी चाहिए दूसरों के प्रति, वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसिंग होती है। और उसका एविडेंस आपको इस तरह से दिख जाएगा कि जब हम खुद स्टूडेंट्स थे तो हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी अपने गुरुजनों के प्रति, वो रिस्पेक्ट आज हम मिस करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स को आप छोड़ दीजिए, उन हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स को छोड़ के आप बल्क में देखिए, आप मेजॉरिटी में देखिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो रिस्पेक्ट उनको आपको देनी चाहिए। तो कई बार ये मन में सवाल आता है कि जब आज का यूथ ऐसी डायलेमा वाली सिचुएशन में रह रहा है, आज का जो यूथ है जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा विश्वास कर रहा है, आज का जो यूथ है जो एथिकल डायमेंशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में भी गरज नहीं कर रहा है, तो वो डेवलपमेंट लाएगा या डेवलपमेंट लाने में जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो कितना सच्चा कंट्रीब्यूशन होगा, ये तो स्थिति पे निर्भर करता है। और ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की जो सोच है और उस व्यक्ति का जो अप्रोच है। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जो भी कार्यक्रम की गतिविधि तो प्रभाव मुझे आभार दो दिन की मुझे डॉक्टर जो भी प्रेरणा की उन्होंने प्रतिक्रिया इसको साथ करके करना चाहते थे सोचकर हमारा वहाँ से पाया लगते बाद अगर आप यहाँ पे और उसके बाद को आपके सभी से सारा लोग है सभी लड़के अब चलने की नहीं हुआ वो आपको पेपर कर नहीं था और उस चक्कर में हमारे साथ हमारे वो भी भर्ती करते तो आप देगा आपके पर्सनली आपको तो प्लीज आप और आपको नहीं पता होना चाहिए आप सेकंड सेशन की बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है क्योंकि वो आपके लिए का अनुभव जा रही है तो आप लोगों को जाएगा नहीं जिसका हमारे इसमें और प्लीज लिखते हैं और इंजॉय करने लाइफ करने में इरादा करने चाहता है इसमें भी थोड़ी बेटा थैंक यू सो मच